Good morning, students. Today, let us start a new chapter in science. Chapter 9. Name of the chapter is Structure and Function of the Living Organisms, the Animals. Okay, the structure and function of the living organisms, the animals. We have read similar chapter like this, structure and function of living organisms, plants. And now let's start regarding structure and function of animals. Okay, in this chapter, we we studied about the structure and function of the flowering plants. We have already read in chapter 7. We shall now discuss in detail the structural and functional aspects of animal's body. We shall now discuss in detail the structural and functional aspects of animal body. In this chapter, what shall we read? We shall know regarding the structure of various parts of the animal body and function of those parts. Function means what does they do? Now, with special reference to the human body, with respect to human body means our body, yani that is to say, today we are going to read about our body and various parts of the body and their functions. Let us quickly recapitulate means what? Remember, and try to remember. Let us quickly recapitulate the levels of an organism. तो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे चीज़ है, लेकिन हम सब उसको हर एक मतलब एक तो सिस्टमेटिक स्टेज में हम उसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे सेल हो गया, टिश्यू, ऑर्गन्स ठीक है. Let us quickly recapitulate the levels of an organism. All organisms are made up of cells. All organisms are made up of cells. So when you are going to read about the structure of the animal body, then what is the smallest part of the animal body? And so that smallest part is called the cell. All the organisms are made up of cells. सेल को जोड़ जोड़ के ही पूरा बॉडी बना है. द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स. सेल जोड़ जोड़ के ही लिविंग थिंग्स कोई हो सकता है, कोई एक वन बॉडी सिंगल सेलुलर एनिमल है, और कोई एक से ज्यादा सेल वाला है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. It has a structure of its own and performs many function. और it स्ट्रक्चर सेल्स का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है ना. प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल है, फिर एनिमल बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग है ना शेप, सेल शेप्स वाला है, यानी सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स है. सो द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट हैज ए स्ट्रक्चर है, इसका भी पार्ट्स है. स्ट्रक्चर मतलब इसका भी पार्ट्स है ऑफ इट्स ओन एंड परफॉर्म मेनी फंक्शंस. बहुत सारे काम करता है सेल. हमारा बॉडी जो काम करता है वो एक्चुअली सेल से द्वारा ही होता है. इट हैज ए स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन एंड परफॉर्म मेनी फंक्शंस. ग्रुप ऑफ सेल्स मेक ए टिश्यू. अब देखो, तो सेल हो गया एक तो सिंगल यूनिट, सबसे छोटा यूनिट. और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है? एक तो टिश्यू बनाता है. ठीक है. टिश्यूज कलेक्टिवली फॉर्म ऑर्गन्स. तो जैसे कि हमारा तो लेग सोचो, है ना, तो लेग सेल्स से बना हुआ, बहुत सारे सेल्स लेके सेल्स मसल बना है. तो जो मसल्स आर द टिश्यूज. ओके. अब पूरा लेग क्या हो गया? ऑर्गन हो गया, एक तो बॉडी पार्ट हो गया. ग्रुप ऑफ सेल्स मेक ए टिश्यू. टिश्यूज कलेक्टिवली फॉर्म ऑर्गन. और बहुत सारे टिश्यूज लेके ऑर्गन, यानी हमारा एक तो लेग में बहुत सारे मसल्स है ना, कप मसल्स है, तो मसल्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स, है ना. दोज मसल्स मेक एन ऑर्गन. ऑर्गन जैसे कि हमारा एक तो हो गया हार्ट. आवर हार्ट इज एन ऑर्गन. जो लंग्स आर ऑर्गन, आईज आर ऑर्गन, यार इज एन ऑर्गन, है ना. मेन पार्ट्स, माउथ इज एन ऑर्गन. ओके. So the different organs in turn working together for a certain major activity form an organ system. The different organs in turn working together for a certain major activity and form an organ system. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने वाला सिस्टम. तो क्या है? व्हाट आर द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हम सब खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक तो सिस्टम है. खाना खाता है, खाना को डाइजेस्ट करता है, उसको बॉडी में मिलाता है, और जो अनडाइजेस्टेड है उसको निकाल देता है. तो ये एक तो ऑर्गन सिस्टम है. तो व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम? जैसे कि माउथ हो गया, हाँ, देन फूड पाइप हो गया, देन स्टोमक हो जाएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन होगा. इस तरह से ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर एक तो ऑर्गन सिस्टम बनाता है. और एक तो कोई मेजर, यानी एक तो मतलब एक तो निर्दिष्ट काम को पूरा करता है, ये खाने का.
तो डाइजेस्ट सिस्टम, श्वास लेने, ब्रीदिंग करने का, हवा लेने का, हवा छोड़ने का, तो दैट इज ब्रीदिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो दोज आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. Now, the human and animal bodies are made up of many such organ system. तो हमारे बॉडी में वैसा many such organ system है. So we shall read all about organ systems. Such organ systems which carry out different functions of the body. So let us see what are the various organ systems. The following are the main organ systems of the body. तो organ systems क्या हो, देखो तो अब कहाँ से ये system छोटा से बड़ा में आ रहा है. सेल हो गया सबसे क्या, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना. सेल्स, सेल्स से ऊपर वाला, सेल्स से बड़ा बड़ा जो पार्ट्स है वो क्या है, टिश्यूज. और टिश्यूज मिलकर क्या बनाता है, और बड़ा बॉडी पार्ट, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन. और ढेर सारे ऑर्गन मिलकर एक तो काम, स्पेसिफिक काम को करता है. ठीक है. सो इन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल्स आर द लोएस्ट लेवल, देन द अपर लेवल इज द टिश्यू, then higher level is the organ, and by the help of or many organs working together, they form organ system. So let us know what are the various organ systems. The following are the main organ systems of the human body. डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ये क्या, खाना खाना और उसको डाइजेस्ट करना. रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ब्रीदिंग सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा ब्लड जो मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. नर्वस सिस्टम, हमारा जो नार्व काम कर रहा है, सेंस जो काम कर रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं चोट लग गया तो पता चल जाता है, कोई खतरा है, कोई अच्छा है, जो तुरंत पता चल जाता है, तो दैट इज नर्वस सिस्टम. देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, और वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको निकाल देना, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, जो हमें नहीं चाहिए है, बिना जरूरत वाला चीज जो बनता है, जो बॉडी में रहेगा तो बॉडी खराब हो जाएगा, ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम वो निकाल देता है. स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, द सिस्टम ऑफ बोन्स है, बोन्स फ्रेमवर्क बना होकर रखा है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जन्म देने वाला सिस्टम, ये सारे सिस्टम है ना, सिस्टम चलता है बहुत सारे ऑर्गन्स के द्वारा. ठीक है. So today let us know the digestive systems. Just see, this is the part of the digestive system. मतलब हम सब खाना खाते हैं और खाना कैसे हमें एनर्जी देता है. ठीक है ना. दिस इज द माउथ. We are eating the foods from mouth. We are ingestion means we are taking the food in, then it is coming through the food pipe, it is coming to the small stomach, then to the small intestine. This long tube is the small intestine, and from small intestine it is going out, and it is absorbed, water is absorbed, and then waste undigested food material are passed out, thrown out from our body through anus. Okay. So things like this is an organ system, and this digestive system is an organ system. This digestive system is an organ system. So what are the various parts of this digestive system or organ system? Mouth हो गया, esophagus or food pipe, then is your stomach, then small intestine, then large intestine, and rectum, anus, and there are several glands which also help in digestion. One is the pancreas and other is the liver. So just a digestive system. Food contains different kinds of substances, and these substances are not in the same form as needed by our body. खाना में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें जो चाहिए क्या उस लेवल में वैसा सिंपल फॉर्म में है नहीं. They need to be converted into soluble particles. They need to be converted into soluble particles, water soluble particles. तभी ब्लड उसको, खाना में जो न्यूट्रिएंट्स है तभी ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा. The process of breaking down or conversion of food into very fine and soluble particles is called digestion. और नहीं तो डाइजेशन का और एक डेफिनेशन है. What is digestion? It is the process of breaking down of complex food materials into simple form so that it can be absorbed by blood. Okay. और नहीं तो किताब में जो लिखा हुआ उसको भी लर्न कर सकते हो. What is digestion? The process of breaking down or conversion. हाँ, खाना जो खाते हैं बड़ा बड़ा पीस लेते हैं, उसको चूर चूर कर देना है ना, ब्रेकिंग डाउन करते हैं. कन्वर्सन ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन सोलुबल फॉर्म, इतना फाइन पार्टिकल्स की वाटर में सोलुबल हो जाए, घुल जाए, है ना. देन ओनली इट कैन बी एब्जॉर्ब बी बाय ब्लड. सो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स. ठीक है. तो लेट अस नो द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. द माउथ. The mouth is also known as the oral cavity. The mouth is also known as the oral. Today, let us. I'm not going to tell you in detail. Today, let us know the various parts of the
digestive system, and we shall have to draw the diagram of it. Okay, fine diagram must be there. So the mouth, just see, the mouth is one of the organ of the and mouth consists of which part? The teeth. uh, the teeth, there are milk teeth and permanent teeth in case of children and adult. So teeth, tongue. So what are the functions of tongue? These are various types of teeth. Then in the mouth there are salivary glands, which secrete saliva, digestive juice, and the food pipe. Then we have got the food pipe. And a food pipe, the food moves from mouth to the stomach by the help of food pipe. It is also called esophagus. And then we have got stomach, then liver and pancreas, then small intestine, then large intestine, then anus, uh, rectum and anus. So these are the various parts: stomach, liver, pancreas, small intestine, large intestine, anus. These are various parts of digestive system: the food pipe, salivary glands, tongue, teeth, the mouth. Okay, so our homework today is to draw the diagram of digestive system. Okay, nothing else. And read two pages, page number 140 and 141 only. Okay, thank you.